Good evening, everyone, and we are beginning with today's lecture. We are doing paper on part B, and today we are beginning with the salient features of the Indian Constitution. Okay, we are beginning with the features of Indian Constitution. Now, before we proceed, there are certain features of the Constitution that you know. What are the features? Tell me what all about the features of the Constitution you are aware of. Tell me what are the salient features of Constitution about which you are totally aware or you are clearly aware. Longest constitution in the world. Very good. Longest Constitution in the world. Very Most complex. most complex. Very good. It's called a living document because it continues to change. Very good. It's a living document. Rather than saying the longest, we'll use the word lengthiest. Right? We'll say it is complex document. Very good. But what are the features? What are the features of the Constitution? So it has certain features like it has divided into parts, which are further divided into articles. There are schedules in the constitutions, right? In our constitution, there are parts which includes the introduction, that is called as preamble. The important parts of the constitution are union and its territory. Part 1. We are just writing important parts. Then there is fundamental rights, DPSP, fundamental duties, union, state, emergency, center-state relations, interstate relations, Panchayati Raj, municipalities, constitutional bodies. These are the certain features of the Constitution, right? These are certain salient features of the Constitution. Do we agree to it? Yes or no? These are the features? Yes, no? All agree? Very good. Now, when you know what are the features of the Indian constitutions, that means you have no doubt in understanding the meaning of the constitution, right? You all agree to this, that you know the salient features of the constitution? Yes or no? हम कोई जवाब नहीं देंगे, हमें क्या पता कौन सा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं? हैं? कोई दिक्कत है आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने में? यस सर. क्या दिक्कत है? आप बताएंगे सर. हम बताएंगे. वेरी गुड. इसका मतलब फीचर्स तो बाद में, पहले समझेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? The syllabus says what are the salient features of the constitution, but we cannot understand about the constitution until unless we know what is a constitution, right? So what is a constitution? What do we understand about the constitution? क्या होता क्या है constitution? So constitution is not something that we say that it is a living document. तो living document तो ठीक है, ऐसे तो 3D इमेज, कोई भी 3D इमेज बना देते हैं, लिविंग इमेज होती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं क्या? उसे तो जिफ बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बोलते हैं. जो लिविंग इमेज होती है उसको तो जिफ बोलते हैं, राइट? है ना?
तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है. Because we are the students of political science, and in political science, the interrelationship between state, individual, and society is established in India on the basis of the Constitution of India. Right? So, बाकी सब चीजें आगे चलेंगे, पहले हम समझेंगे what is the Constitution. So, Constitution is the power map of the governance in our country. Constitution is the power map of governance in the country. Constitution of India is actually a document that defines the basic fundamental law in our country. The basic fundamental laws of our country are defined by the Indian Constitution. The Indian Constitution is the first and foremost social legal document of India. It is the first and foremost social legal document. Right? It is one of the documents on which various scholars have given their views. Right? So we need to understand and we need to write about the various views of the Indian Constitution. For example, Granville Austin has called the Indian Constitution as the cornerstone of a nation. According to Granville Austin, Indian Constitution is a cornerstone of a nation. It means it is the point from which everything in this country is identified. Cornerstone का मतलब यहाँ से सब चीजें measure होती हैं. Okay? Oh, sorry, लिखना था Granville Austin. Cornerstone लिखा. Granville Austin. इनके बारे में सुना है? Granville Austin नाम सुना है कभी? कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? लक्ष्मीकांत की बुक में. कहाँ सुना है? लक्ष्मीकांत. वेरी गुड. क्या बोला था उन्होंने, क्या व्यू दिए थे? मैं क्या मतलब बुक में कुछ लिखा हुआ है, क्या मतलब है? तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो वर्ड सुनते हैं ना, इनका कंसेप्ट इन्होंने वो दिया था. तो फॉर अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ cornerstone of a, understood? Cornerstone of a nation. सिमिलरली ये सब आप लोगों को लिखवाएंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं है, तो ये हमें खुद से लिखना होगा. मतलब दिस इज एन एडेड स्ट्रेंथ दैट विल हैव, राइट? क्योंकि हम लोगों को एक थोड़ा सा एज चाहिए ना, क्योंकि सिलेबस में व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ गया, राइट? तो ग्रैनविल ऑस्टिन, व्हाट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन? अकॉर्डिंग टू आदित्य निगम, according to Aditya Nigam, the Indian Constitution is a text without author. It is a text without author. It means ये एक text है जिसका कोई author नहीं है. It is just a text which is based upon morality, values, ideals, foundations. This is the view of Aditya Nigam. Then there is प्रताप भानु मेहता. बेटा अब इन दी पेपर ऑन पार्ट बी ये एक नाम है जो आप बहुत सुनेंगे. प्रताप भानु मेहता. अकॉर्डिंग टू प्रताप भानु मेहता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ revolutionary document. It is a revolutionary document that is transforming a traditional society into a society that is based upon modern democratic society. A traditional society is made a modern democratic society. For example, हमारी society में inequality is imbibed to the core, right? But the constitution also provides a right to equality. Okay?
समझ में आया? Then we also have views of Bipin Chandra. He has a views of Bipin Chandra, where Bipin Chandra has identifying that constitution is not a break from the past, but it carries certain colonial legacy. That it is having a colonial legacy. Then there are views of Ivor Jennings. Ivor Jennings के हिसाब से it is nothing but a replica of 1935 Act. Government of India Act 1935. And according to Ivor Jennings, it is nothing but a lawyer's paradise. Okay. So these are the certain views with respect to the Indian Constitution that we need to write. Okay. Are we clear with this? Yes, no? Very good. These are the views of the Indian Constitution that we need to write. So just start writing. Start writing that what is the Constitution. Heading will be salient features of the Indian Constitution. In this, we will start writing. सर हाँ बेटा. सर जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपन यूज करते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर जो क्या ऐसे भी है कि जो मतलब रिटन नहीं है या ओरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है? हाँ हाँ, और ओरल नहीं, अनरिटन बोलेंगे बेटा, ओरल नहीं है. मतलब अनरिटन का मतलब क्या हुआ? अनरिटन का मतलब है वहां पर स्पेशली एक बुक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां जो भी नया लॉ आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है. यूके है, जैसे यूके इज एन एग्जांपल ऑफ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट डज नॉट मीन कि यूके में जो है ओरल ही है कि हमारी सरकार चलेगी, ऐसा नहीं है. यूके में द पार्लियामेंट्री लॉ, व्हाटएवर पार्लियामेंट्री लॉ दे आर हैविंग, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये लिख भी लीजिएगा साइड में. यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल, दीज थ्री कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन एंड अनरिटन. रिटन एंड ओरल नहीं, ये बचपन में पेपर होते थे, रिटन एग्जाम, ओरल एग्जाम, राइट. रिटन एंड अनरिटन. अनरिटन का मतलब ये नहीं कहीं लिखा हुआ नहीं. अनरिटन का मतलब है लॉ जो बनते रहेंगे वही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. जैसे यूके में एक नया लॉ आया था, राइट टू फॉरगेट, तो बन गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बन गया, खत्म करनी. पार्लियामेंट ने जो भी पास किया वही कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए यूके देयर इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. सर वहां पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस नहीं रहेगा फिर? बेटा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब जरूरी नहीं होता. इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट दे आर हैविंग. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है द गवर्नमेंट दैट इज बेस्ड अपॉन द रूल ऑफ लॉ. ओके, सो इन इंडिया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किसने बनाया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने. वेरी गुड. वो कहां से आई? इलेक्टेड फ्रॉम दैट ऑर्डिनेंस दिस टाइम. सेकंड कैबिनेट मिशन के से हुआ था ये फॉर्मेशन. आए कहां से थे? मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे क्या? नहीं, प्रांतीय तो उसमें टाइम के जो प्रांतीय असेंबलीज थी उनसे इलेक्टेड हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड. प्रोविंशियल असेंबली से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. इट मींस पॉलिटिशियंस ही तो थे ऑलरेडी, है कि नहीं? वेरी गुड. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास है? ओनली पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास है. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज पार्लियामेंट कर सकती है अमेंडमेंट के थ्रू. यही तो यूके में हो रहा है. बस ये है कि यूके में एक बुक नहीं है, ठीक है. दे डू नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. उनके जो लॉज आ रहे हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि रीजन है द स्टेट यूनाइटेड किंगडम, द एंटिटी यूनाइटेड किंगडम existed long before and then they brought the constitutional government. So the laws, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स,
मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स आप लोगों ने सुना है, रूल ऑफ लॉ सुना है, ये कहां से आया है? ऑल दीज थिंग्स केम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. So such things already existed in the United Kingdom. It's just that they later on gave it the form of constitutional monarchy. Okay, but in India, the state of India was established artificially by combining various princely states into forming a union of India. Otherwise, India as an entity only existed during the British time. Before that, there was the existence of provinces and princely states. पहले provinces और princely states थे ना. मद्रास प्रोविंस अलग, सिंध अलग, बॉम्बे अलग, और मौर्यन एम्पायर एम्पायर्स की फॉर्म में था. इंडिया एज एन एंटिटी तो बहुत बाद में जो है ज्योग्राफिकली हमने कंबाइन करी बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. अगर आप ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे, इट इज एक्चुअली द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू फॉर्म एन एंटिटी, दैट इज द ज्योग्राफिकल एंटिटी इंडिया. तो इसीलिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत थी through which we can establish a government based upon the constitutional monarchy. इसलिए हमें लिखने की जरूरत पड़ी थी, so that we can have a ready reference. Because हमारे लिए बहुत नया था. Democracy was very new for us. The type of democracy where the people, the inhabitants, the indigenous people are voting. हमने डेमोक्रेसी कैसे इमेजिन करी थी? The British are giving us certain power और उसी में हम थोड़ी थोड़ी पावर यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ना बनाते तो हम भी क्या करते? वही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते रहते. वही यूके में होता है. समझिए बेटा, ये मतलब नहीं है कि वो कुछ अलग बना रहे. हम भी पावर तो हमारे पास भी वही उतनी पार्लियामेंट को दी हमने भी. बस ये डिफरेंस है, यूके में गवर्नमेंट कोई भी चेंज ला सकती है, यहां पर पार्लियामेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही चेंजेस ला सकती है. एनीथिंग दैट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि बेटा वहां पे है ही दो पॉलिटिकल पार्टी. वहां पे आइडियाज दो ही टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, आइदर द लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी. यहां पर डाइवर्सिटी है, बिकॉज ऑफ विच देयर कैन बी वेरियस आइडियाज. अब यूके में ऐसा थोड़ी कोई डिबेट आएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए. कोई भी, do you imagine having a debate in UK that what should be the official language? No, they know. यहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखा हो, ओए होए 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 होए, पता लगा गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में आया है, क्या तुमने थाना खाया, क्या मेरा बाबू छोला है, वहां से कह रहे नहीं भटूरा. Because we have diversity, so we need a basic paradigm around which everything is being followed, right? बस ये डिफरेंस है. बाकी we are also following the same system, they are also following the same system. Their parliament is sovereign, our parliament is supreme. In India people are sovereign. Okay, अब तो थोड़ा सा क्लैरिटी आई आप लोगों को. 3 कंट्रीज हैं, इजराइल, न्यूजीलैंड एंड यूके, जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. चलें आगे, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? हाँ, वेरी गुड. तो लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन is considered as the most fundamental law in India. Constitution is considered as the most fundamental law in India, around which the whole legal and governance system is based, around which
the legal and governance system is based. Okay, right? The Constitution of India, the Constitution of India is considered as the Constitution of India is considered as the first and foremost social document, the first and foremost social document the Constitution of India is considered as the first and foremost social document, which is a living statement, which is a living statement representing, which is a living statement representing the power map of India, which is a living statement representing the power map of India. Representing the power map of India. Okay, right? Next paragraph. According to Granville Austin, Granville-Austin, according to Granville Austin, Constitution of India, according to Granville Austin, Constitution of India is the cornerstone of the nation. Constitution of India is the cornerstone of the nation. Okay, full stop. Right, next line. According to Aditya Nigam, Constitution is a text without author. According to Aditya Nigam, Constitution is a text without author. Text without author. Full stop. Right. Next point. According to Pratap Bhanu Mehta, this is very important. Okay. According to Pratap Bhanu Mehta, Constitution is a revolutionary document. According to Pratap Bhanu Mehta, Constitution is a revolutionary document. Revolutionary document that made an attempt. Constitution is a revolutionary document that made an attempt to transform a highly traditional society into a modern democratic society. Highly traditional society into a modern democratic society. Highly traditional society into a modern democratic society. Full stop. Right, next line. According to him, Indian Constitution is cosmopolitan in nature. According to him, Indian Constitution is cosmopolitan in nature, which provides एक बार रिपीट करना. cosmopolitan, मतलब बहुत जगहों का mixture. Cosmopolitan in nature. Indian Constitution is cosmopolitan in nature, which represents, right, first point, constitutional values
which represents constitutional values like liberty, equality, which represents constitutional values like liberty, equality, fraternity, and justice, which represents constitutional values like liberty, equality, fraternity, and justice. Second point, it is drawn from various sources. It is drawn from various sources. Right? The judicial interpretation of the Constitution, third point, the judicial interpretation of the Constitution is on the basis of various legal traditions. The judicial interpretation of the Constitution various legal traditions. Full stop. Right? Next line. Dr. Ambedkar explained the purpose behind. Dr. Ambedkar explained the purpose behind various legal traditions. Dr. Ambedkar explained the purpose behind various legal traditions. What is the purpose? Write first point. Various. You don't write various legal traditions. Write purpose behind a cosmopolitan constitution. It would be better. Dr. Ambedkar explained the purpose behind a cosmopolitan constitutions. In this first, it will help solving the debates. It will help solving the debates. It will help solving the debates over norms and values. It will help solving the debates over norms and values. सर वैल्यूज के पहले वाला वर्ड क्या है? Norms, NORMS, norms. जैसा चलता आता है और ऐसा क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, dowry has been a norm in the society, right? But is it justified? Is it ethical or not? So how will you identify that it is a crime as per the Indian Constitution? That's it. It's over. No confusion. Right? Similarly, untouchability. It has been a norm in the society. Right? So is it good to practice untouchability or not? When there is a confusion, what will you say? Article 17 prohibits untouchability. It means it is not even debatable. Otherwise समझ नहीं थोड़ा सा तो चलना चाहिए, थोड़ा सा तो होना चाहिए, है ना? Confusion हो जाता है, right? तो इसीलिए this is the idea. Then second point, it will serve the interest of the people. It will serve the interest of the people without being tied. It will serve the interest of the people without being tied to a specific tradition. It will serve the interest of the people without being tied to a specific tradition. Okay? Without being tied to a specific tradition. Right? समझ में आ गया? Very good. Now, next views of Bipin Chandra. Bipin Chandra सुना है नाम आप लोगों ने? है ना? Very good. So according to Bipin Chandra,
Indian Constitution is not a complete break from the past. Indian Constitution is not a complete break from the past. Complete break from the past. Okay. Break from the past. A colonial legacy is continuing, and unlike China, India did not start from a clean slate. And unlike China, India did not start from a clean slate. Okay? India did not start from a clean slate. Are you clear? Very good. Now, next views of Ivor Jennings, IVOR JENNINGS, Ivor Jennings. The Indian Constitution is adopted directly. ये जो भी बोल रहे हैं आइवर जेनिंग्स बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ठीक है? Indian Constitution is adopted directly from the Government of India Act 1935. The Indian Constitution was adopted directly from the Government of India Act 1935, which is too long and complicated. Which is too long and complicated. Which is too long and complicated. And is like a lawyer's paradise. Which is too long and complicated and is like a lawyer's paradise. Okay? Now, Constitution क्या है? Are you clear with this? Now, Constituent Assembly was made on the recommendation of, you have 4 options: August Offer, Cripps Mission, Government of India Act, or Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan. Very good. Cabinet Mission Plan. How the members of the Cabinet or the Constituent Assembly were chosen? Were they elected or appointed? Or let us say, were they elected or nominated? Both. Both. Very good. You know, this is a prelims question. This is a prelims question because the members from the provinces were elected indirectly and the members from the princely states were nominated by the princes. Very good. Now, the question is not why the Constitution Assembly was there, but what is the reason behind having a Constituent Assembly? So, Constituent Assembly are made according to Ivor Jennings. There are 3 situations in this world after which the Constituent Assembly is made. Okay, there are 3 reasons or 3 situations after which a Constituent Assembly comes into being. First is whenever there is a great revolution. Whenever there is a great social revolution, then the Constituent Assembly forms into or comes into being. Right? That happened after the Glorious Revolution. Yaad hai? The Lockean system where the Constitution was established. So great after Great Social Revolution or the American Revolution.
American Revolution. This is only after the American Revolution, the people, they came together and they started to have a constitution. Right? The second reason, according to divergence, is when a country overthrows a foreign rule or the country comes out of a foreign yoke. The third reason when a constituent assembly comes into being is when various units, they come together and form a single political unit. Okay. In these conditions, a constituent assembly comes into being, and actually India fulfills all three conditions. India fulfills all three conditions. Why? There was a social revolution. Yes, the Indian freedom struggle was a type of a social revolution, right? India or the Indian people, they threw the British out of the country. And third, there are various political units, they came together to form an entity, political entity, India. So all three conditions are fulfilled in India, and that is why a Constituent Assembly was made in India, where the Constituent Assembly represented the Lockean idea of having a fiduciary trust. Remember, Locke told about having a social contract where the people will be the trustees and there will be a trust. Right? So Constituent Assembly is nothing but an example of a fiduciary trust. Right? Understood? And this fiduciary trust, what it is representing? What it is representing? It is representing Rousseau's general will. है ना? अच्छा ये बताइए, आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आप बोलेंगे हाँ, तो ये आपकी एक्चुअल विल है, रियल विल नहीं है. अंदर से आप चाहते हैं टचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है? और यही आपकी रियल विल को कंबाइन करके सबने जनरल विल बनाया. And that is why very few people, they believe in the ideas of untouchability, but still few believe. Still few believe. ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बिलीव करेंगे, है ना? तो दूसरा एग्जांपल, डाउरी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? चलो छोड़ दो. फ्रेंड जोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बताओ, फ्रेंड जोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिपेंड करता है सर, हम फ्रेंड जोन हो रहे हैं, हम कर रहे हैं उस पे. नहीं, अगर आप कर रहे हो तो मतलब आप कौन सी विल पे एक्ट कर रहे हो? समझ में आ रहा है? दैट वेदर इट इज योर एक्चुअल विल और योर जनरल विल. तो बहुत कंफ्यूजिंग है. लेकिन जनरल विल क्या रहती है? फ्रेंड जोन एक वर्ड बना दिया गया है विच इज हैविंग अ नेगेटिव कोनोटेशन. जनरल विल क्या बन गई है? नेगेटिव कोनोटेशन हो गया है. और जनरली अगर आप सोचते अरे यार उसने हमें फ्रेंड जोन कर दिया, ठीक है, तो वो एक आता है ना मीम आता, कोई हंस भी रहा है, रो भी रहा है, हंसे रोए क्या करे, है ना? मतलब you have been friend zoned. This is a word which is having 2 or 3 or 100 interpretations, but majorly it is having a negative connotation because the general will is made in such a manner. है ना? समझ में आ रहा है? यही रूसो की जनरल विल भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट करती थी कि जो जनरली लोगों को चाहिए. अब जैसे लोग कहते थे नहीं हमको नहीं चाहिए इक्वालिटी, कह नहीं आपको नहीं पता, आपको चाहिए, आपको अंदर से किसी ने, अंग्रेजों ने कहते थे कॉलोनियल लीगेसी है, अदरवाइज हम तो चाहते हैं इक्वालिटी. कॉलोनियल लीगेसी आ गई है, दैट दे हैव डिवाइडेड एंड रूल्ड ऑन अस. दैट इज नॉट यू. आप तो अंदर से, अब जैसे सेक्युलर होना चाहिए कि रिलीजियस होना चाहिए? सेक्युलर होना चाहिए कि रिलीजियस होना चाहिए? बताओ बताओ बताओ. दोनों होना चाहिए, क्या दिक्कत है दोनों में, है ना? लेकिन हमारी ये एक्चुअल विल बन चुकी है कि हम दोनों को अपोजिट मानते हैं. दिस हैज बीन आवर एक्चुअल विल. हम सेक्युलर का उल्टा मानते हैं रिलीजियस, राइट? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जनरल विल निकाली.
कि बेटा सेक्युलरिज्म इंडियन वाला फॉलो करेंगे, कि रिलीजन प्लस सेक्युलरिज्म दोनों चीजें दे कैन गो हैंड इन हैंड, है ना, है ना, है ना। यही जनरल विल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को हु आर सॉवरन, पीपल, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट? पीपल, राइट। लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए लॉ बनाती है, आप गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाते हो। गवर्नमेंट इज मेकिंग, ये तो गलत, गवर्नमेंट कह रही तो गवर्नमेंट बोलते नहीं, आप जिससे अपनी एक्चुअल विल पे एक्ट ना करें इसलिए हम आपके लिए लॉ बना रहे हैं, ये सब आप ही के लिए है। हम तो फकीर आदमी हैं, झूला लेके चल पड़ेंगे, पता ही है सबको, है ना। थोड़ा बहुत जिम कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर पे दिखाएगा नहीं तो बोलेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे थोड़ी देर, है ना। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट था, ठीक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ होता है? डेवोस में होता है, हर साल होता है। क्वेश्चन पता नहीं अभी तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है। कौन कराता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम खुद ही अपने आप होता है, वो एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। समझ में आया? बहुत फेमस है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत फेमस है। WEF इज वेरी फेमस, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, टेंशन तो नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, क्यों बनी ये भी बता दिया, कैसे बनी ये भी बता दिया। कैसी बनी? मस्त बनी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, राइट, है ना। क्योंकि इतने साल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया से चल रहा है, इसका मतलब मस्ती बनी होंगी। आपको लगता है कुछ थोड़ा सा मजा सा नहीं आया? बताओ, देख लो पिछले जन्म वनम में आप में से कोई मेंबर रहे हो तो बताओ, है ना, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग ना, 75 ईयर्स है। हम तो नहीं, हम तो फ्रेश है, तो हम तो पिछले जन्म का कुछ पता नहीं है क्या उस जमाने में रहता होगा ना। तो आप लोग देखो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया थी। बट स्टिल देयर कैन बी सम क्रिटिसिज्म, बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी की शुरुआत बिना क्रिटिसिज्म के कैसे हो सकती है ना। अरे सिंपल है, जिस दिन नई नई इंग्लिश बोलने होते हैं ना, अपने दोस्त से बोलते हैं नाउ वी विल टॉक इन इंग्लिश, that day we will try to find the grammatical errors in our friends, और दोस्त बोले और भाई no speak in English, right, that very same day we'll try to speak in English। वो तो 2-3 दिन बाद होता है कि नहीं यार रहने दो, जो है कैंसिल करते हैं, मजा नहीं आ रहा है। But the first day you will always try to speak in English, you will try to relate to it। Similarly, this was the establishment or foundation of our democracy, and it has been criticized that there have been certain limitation of our constituent assembly, beginning from that the constituent assembly was not a representative body. The constituent assembly was indirectly elected or it is nominated. That is not a truly representative body, and that is why it was only representing a section of people. And why do we call it as a sovereign body then, which is representing to the whole country? If it was representing the whole country, the people should have been elected by the people directly, right? So this is one of the criticism, but this criticism has been denied by the Keshwaran Bharti case, or the Supreme Court in Keshwaran Bharti case, where they have clearly established that the Constituent Assembly, though was not established on the basis of universal adult franchise, but it represented the India truly. Okay. The second criticism, that it was not a sovereign body because it was made by the British, so it had to follow the ideals of the British. But after the India Independence Act 1947, the only document that will be ruling India became the Constitution of India after it had been enforced. So it was a sovereign body that establishes a sovereign country called India. It was also criticized for being time consuming. Constitution बनने में कितना टाइम लगा था? Constitution बनने में बच्चों कितना लगा? 2 साल 11 महीने, है ना, ये तो याद है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, right? So it was considered as time consuming कि 3 साल में कौन बनाता भाई कॉन्स्टिट्यूशन?
right? That is why some members of the Constituent Assembly called it as a drifting committee. कि धीरे धीरे चलती है. Then another criticism of Constituent Assembly that it was dominated by Congress. Okay, that most of the members were from the Congress party, and that is why it was called as it is a Congress committee or Congress Assembly. Right? However, it has been countered because there were communists also in the Constituent Assembly. They were the representative of the socialist parties. They were representative of the Hindu Mahasabha also. They were the representative of Muslim League also, Indian Muslim League. They were representative of the and some members who could not be elected, they were also being represented. For example, Dr. Ambedkar, they were given opportunity because of their wisdom. And we all know Dr. Ambedkar is the father of the Indian Constitution. So it was a truly representative body. We cannot say not that only Congress was represented. It was then criticized that it is dominated only by legal luminaries, that the words in the Constitution are written in such a manner that it could only be understood by the legal luminaries. Right? To an extent, it is also a credible criticism, but it is not dominated by legal luminaries. It is dominated by the people who were English educated. And at that time in UK, the English education was dominated by the education in law. Most of the people that were educated at that time, they were educated in law from England. So it had become their part of language in which they wrote the Indian Constitution. It is not the legal terminology, it is the language with which or through which they were communicating with each other. Then it was criticized that it is a Hindu dominated body, that maximum members of Constituent Assembly were Hindus. है ना? अब सिंपल सी बात है, जहां पर 70% पॉपुलेशन किसी एक ग्रुप की होगी तो वहां पर 70% लोग ही तो होंगे उसमें और डोमिनेट तो होगा ही. But it is not about dominating because the constitution chosen was secular. अब उसमें चाहे 100% भी एक रिलीजन के लोग होते तो भी सेकुलर चूज करते. और एक बात समझिए, अगर एक रिलीजन डोमिनेट किया फिर भी सेकुलर है तो इट मींस इट इज अ बेटर कॉन्स्टिट्यूशन. अगर माइनॉरिटी डोमिनेट कर रही होती तब सेकुलर बनाया होता, दैट कुड हैव बीन अ क्रिटिसिज्म कि माइनॉरिटीज ने सेकुलर बनवा दिया अपने बेनिफिट के लिए. ये तो if it is dominated by a particular religion and still it is secular, so that is not a criticism, it is a advantage or it is an appreciation of the constitution, right? Are we clear? Yes, no, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? और यही है थोड़ा सा criticism. Okay, तो लिखेंगे the criticism of constituent assembly. सर इसमें लैक ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते? नहीं बेटा, लैक और नहीं था ना, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव उस हिसाब से के हिसाब से बहुत सारे थे. उस हिसाब के उस टाइम के हिसाब से तो बहुत थे, है ना? क्योंकि दो चार नाम तो आपको इतने मेल कितने, चलो कितने मेल रिप्रेजेंटेटिव्स के हम नाम बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? नाम थोड़ा देखते हैं, कितने हम बता सकते हैं हम लोग? बताओ बच्चों. अरे 10-12 तो बता ही दोगे आप. डॉक्टर अंबेडकर एक तो हमने बता दी, बाकी आप बताओ. डॉक्टर अंबेडकर तो हमने बता दिया, और बताओ. नहीं बताएंगे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू. महात्मा गांधी कहाँ थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? यही तो, इसीलिए तो पूछा. महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में चरखा चला रहे थे, वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ठीक है, महात्मा गांधी दो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज of that time were not part of constituent assembly. First was Mahatma Gandhi, second कौन?
Sardar Patel. सरदार पटेल तो थे बेटा, सरदार पटेल थे। मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इंडिया तो पार्टीशन 15 अगस्त को हुआ है ना, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस डेट को बनी थी? शाबाश। 26 November 1949. Oh, sorry, assembly. कर लो हाँ, कर लो आराम से कर लो। 9 December 1949 को 49 को बनी थी। 60. वेरी गुड, शाबाश। पॉलिटी, ये तो पॉलिटी रिवाइज करके आए हो तब ये हाल है। तो पॉलिटी Sir, रिवाइज 46 करके है। 46 नहीं, देख लो, कर लो और थोड़ा सा। 9 दिसंबर पे तो लॉक करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 1946, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, ठीक है। और तब इंडिया वाज नॉट पार्टीशन। उस टाइम पे द टू इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, टू इंपॉर्टेंट लीडर्स, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना वर द टू डिग्नेटरीज व्हिच वर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। अगर हम देखते हैं मेल मेंबर्स, तो पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, एच.एन. कुंजरू और तेज बहादुर सप्रू, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अलादी कृष्ण स्वामी आयनगर, नसीरुद्दीन अहमद, then the members like Professor K.T. Shah. These were the major members. In women, Durga Bai Deshmukh, Rajkumari Amrit Kaur, right? Then we had daughter of Professor J.B. Kiplani, Suchitra Kiplani. Okay. So it means it was not very much male dominated. As per the need, the representation of women was also there compared to the education status of women at that time. Okay, the literacy rate of women at that time compared to that, the status was very much, it will not say equal, but equitable as per those times. Okay. So right, the criticism of Constituent Assembly. Constituent Assembly, according to Ivor Jennings, Constituent Assembly, according to Ivor Jennings, Constituent Assembly, according to Ivor Jennings, comes into being, according to Ivor Jennings, Constituent Assembly comes into being in three situations. First, after a great social revolution. After a great social revolution. Second, when the nation throws a foreign yoke. When the nation throws a foreign yoke. Third, Sir, when a nation throws a foreign yoke, Y-O-K-E, or foreign rule. Foreign rule. Third, when a nation is created by fusion of political, when a nation is created by a fusion of smaller political units. When a nation is created by a fusion of foreign political units. Okay? Foreign political units. Full stop. Right, next paragraph. Foreign political या small political? Sorry, small. Fusion of small political units. Small political units. Right? Indian
Constituent Assembly, Indian Constituent Assembly fulfills all the three situations altogether, or fulfills the three situations altogether. Full stop. Right, next line. Constituent Assembly is a representation of Lockean concept of fiduciary trust. Indian Constituent Assembly is a representation of Lockean concept of fiduciary trust. Which is representing Rousseau's idea, of Rousseau's idea of general will. Rousseau's ideas of general will. Full stop. Right. Next line. There can be the following criticisms. There can be the following criticisms of the Constituent Assembly. There can be the following criticisms of the Constituent Assembly. Right. First. According to socialists and communists. Constituent Assembly is not a representative body. According to socialists and communists, Constituent Assembly is not a representative body because it was not elected by universal adult franchise. Universal adult franchise. Universal adult franchise. Okay. Right, next. It is not a sovereign body. As it was created through cabinet mission plan. It is not a sovereign body as it was created through cabinet mission plan. Cabinet mission plan. Third, it was a time consuming body. To which Nasiruddin Ahmad called as a drifting committee. Fourth point. According to Granville Austin, Constituent Assembly
Constituent Assembly was a one-party body. Constituent Assembly was a one-party body with or in an essentially one-party country. Constituent Assembly was a one-party body in an essentially one-party country. Okay? In an essentially one-party country. Full stop. However, according to K. Santhanam, there is hardly any shade of public opinion. There is hardly any shade of public opinion not represented in Constituent Assembly. Okay? Hardly any shade of public opinion not represented in Constituent Assembly. Okay? Then next is dominated by legal luminaries. Dominated by legal luminaries. Legal luminaries. Next, a Hindu dominated body, according to Winston Churchill and Simon. According to Winston Churchill and Simon. साइमन कौन? नाम सुना साइमन? जॉन साइमन याद है? साइमन गो बैक वाला साइमन, ठीक है? तो विंस्टन चर्चिल एंड सेंट साइमन, oh sorry, John Simon, Saint Simon. So this is the criticism of Constituent Assembly. ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, right? Are we clear with this? Very good. Any doubt we have to please tell me. Any doubt we have? Okay. आज इतना ही करते हैं, कल से पढ़ेंगे salient features, कंटिन्यू करेंगे 2-3 दिन. Tomorrow we'll complete preamble, fundamental rights, fundamental duties and DPSPs. Okay. Tomorrow we'll be covering preamble, fundamental rights, fundamental duties and DPSPs. I will not discuss each and every right. I will discuss the idea behind why this right was included. Okay. This is what we will be including. आप लोगों ने submit किया answers. Let me check your answers. आन्या ने सबमिट किया है. इसमें बेटा आप सुमित सरकार का भी व्यू दे दिए, ठीक है? सुमित सरकार का भी व्यू एक बार दे दीजिए, क्योंकि सुमित सरकार ने डिनाई किया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्सिस्ट ने मना किया या इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है जैसे मार्क्सिस्ट बोलते हैं, वेस्टर्न मार्क्सिस्ट. उन्होंने बोला इट वाज अ फ्रीडम स्ट्रगल इन ट्रू सेंस, हाउएवर इट वाज नॉट डोमिनेटेड बाय द प्रोलेटेरिएट, इट वाज डोमिनेटेड बाय नेशनलिस्ट. ठीक है.
और ये 10 मार्कर के लिए बेटा थोड़ा लंबा नहीं हो गया? कितने वर्ड्स एक बार देखना, मेरे ख्याल से 200 वर्ड से तो ऊपर जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 16 100 वही है, ऊपर जा रहा है 200 वर्ड से। तो ध्यान रखेंगे सर, नोट कर लेना। मतलब ये देखिए ना आप, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मार्कर तब आपको लिखना है थोड़ा सा टू द पॉइंट। इसमें पता है क्या आप काट सकते हैं कि मार्क्स ने खुद बोला था, खुद मार्क्स वाज नॉट इन फेवर ऑफ रेवोल्यूशन इन अ लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड और इन एन एग्रीरियन सोसाइटी। बस एक लाइन हो गया, मार्क्स वाज नॉट इन फेवर ऑफ रेवोल्यूशन इन एन एग्रीरियन सोसाइटी, राइट? बिकॉज मार्क्स के हिसाब से तो कैपिटलिज्म टिल द हाईएस्ट स्टेज इज बेटर देन द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स। बेटा इकोनॉमिक है या इकोलॉजिकल है? ईसीओ भूमि, ईसीओ का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल? इकोलॉजी भी क्योंकि सिलेबस में है ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इकोनॉमिकल पूरा लिखेंगे। Yes, sir. वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लिखा है। बस थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करिए, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करिए, वही सारे आपने वर्जन दे दिए। वेरी गुड, ठीक है। ये हटा दीजिए जो आपने लिया अबाउट 25 ईयर्स लेटर, ये तो नोट्स के लिए होता है कि अबाउट कितने साल बाद आइडेंटिफिकेशन। आप बस सीधा लिखिए आरपी दत्त का रिव्यू लिख दीजिए। ओके बेटा, वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन? तो क्या आप दोनों का Questions? आंसर ग्रुप पे शेयर कर देंगे प्लीज? ग्रुप पे ही बेटा, अभी भेजा उन्होंने, ओह ग्रुप ठीक पे है, ही है। ओके ओके। हाँ। क्वेश्चन पेपर देखते हैं, सेक्शन बी। मेंशन द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, लिखिए क्वेश्चन। मेंशन द, अभी तो 21 के पेपर में इतने सारी चीजें देती है, हमें मजा आ गया। मेंशन द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स that define the Indian Constitution. Mention the founding principles that define the Indian Constitution. Okay. कोई डाउट हो तो बताइए। So we will continue tomorrow. ठीक है, we'll continue tomorrow. Thank you very much. हाँ बेटा, सर एक हाँ वो आपने क्वेश्चन भेजा था। हाँ 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 हाँ, तो देखिए बेटा, जियो स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है ज्योग्राफी की वजह से जो लॉन्ग टर्म या फॉर अ लॉन्ग टाइम जो एक इंपॉर्टेंट रखता है रीजन, और जियो इकोनॉमिक मतलब जहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज
उस ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंट बना देती है। जैसे आपने कौन सा पूछा था उसमें, तालिबान पूछा था, कौन सा पूछा था? नहीं, जनरल सेंटेंस था सर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पे। हाँ, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटिकल इतना इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे दैट द रिलेशंस इज बिकॉज ऑफ विच रीजन, because it is very clear that this relation has to continue for long term, but what is the actual reason behind it? Because sometimes the relation is because of the economic reasons, sometimes political, sometimes other reasons. Okay, समझे? Very good. कोई और दिक्कत, कोई टेंशन? We'll continue tomorrow. Thank you very much.